So students, you are welcome in the class of computer, and from today onwards we are going to start our new chapter which is entitled by more about Excel. I hope that you remember that in the previous session we have seen about some basics of Excel, and Excel is a kind of software, or you can say an application software which enables us to create a database, a useful database in which we store the data in the form of table using the columns and rows. Hope I'm clear to everyone, right? So when we use Excel, we use cells. We can perform calculations. We can type the formula in the formula bar. I have shown you how you can just enter any kind of data in your Excel in a very easy manner. So now it's time to understand how we can just learn this Excel in a detailed manner, in an advanced manner. So let's start and be excited to start this chapter. So here we are starting the chapter. So you have learned to create and format worksheets in Excel. So let us now learn some editing and formatting features of Excel. Editing and formatting features of Excel means that we are now enhancing our Excel features. That means we are going to in the advanced segment of Excel. Excel is not about to just giving coloring to your border, giving colors to your data. It's about the how you can store the data. So now we are considering the advanced version, advanced learning of Excel. Okay, so this means the editing and formatting feature. Now, so copying cell contents. Now we will first discuss how we can copy the cell content. Supposingly you have stored something in your cells, in your table. Now how you can copy it also. Copy means just copying the exact data, whatever you want to copy. So you can copy the contents of a cell to other cells by using copy and paste option. It's very simple, I guess. So this is a very simple steps I am going to tell you, and this will be the same steps. Mark my point, student. The same ही रहने वाले हैं, ठीक है, throughout the session. Select the cell. If we are working on a cell, then we have to select the cell first of all. Very simple. Okay, say with me. Select the cell, then click on Home tab. After selecting the cell, from where we have to select now? Click on Home tab. In Home tab, we will find the copy option. What we will find? Copy option. From clipboard group, an animated dashed line appears around the cell. This means that the cell is ready to be copied. इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले आपका सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद होम टैब के अंदर जाना है, वहां पर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर एक कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा. कॉपी जैसे करेंगे यू कैन सी द डैश्ड लाइन अराउंड द सेल, यानी कि डांसिंग लाइन भी आप बोल सकते हैं, वो आपको दिखेगा. उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब आपको जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कॉपी करना है, यानी कि एक नए लोकेशन पे कॉपी करना है. तो आपको एक नया लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, यानी कि नाउ यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द न्यू सेल where you want the content to be copied. So click on paste option from the clipboard group. Here you can see in the screenshot here, this is the data. Okay, this is the data, Geeta, Nidhi and Lalit. Now supposingly I want to copy this Geeta class 7th A and 400 supposingly. Okay, so if I want to copy this data, then I will select this cell. Number 1 step. Number 2 is going to the home tab. Number 3 step, going to the clipboard group and click on the copy, or you can just control plus C also. Then the number 4, you have to select the area, location where you want to copy, and then paste, and then your copied text will be displayed to your new cell. I hope I am clear, students. Please show me your thumbs up sign if I am clear. Now, moving cell contents. Now you are discussing moving cell contents. That means कि how we can move. That was the exact copy. यहाँ पर आप देख सकते हो गीता यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर भी गीता लिखी हुई है, लेकिन यहाँ से जो गीता का जो भी है डेटा है वो रिमूव नहीं हुआ है. We have just copied it. Now you will understand cut and paste option. That means this Geeta's data will be removed from here, and then it will be copied into the new location. Okay. So now we can move the contents of a cell to some other location by using cut and paste method. So the first step is, देखिए वही सेम का सेम स्टेप रहेगा. आप बच्चे कहते हैं कि सर हमें कंप्यूटर के स्टेप्स याद नहीं होते, तो बहुत ही सिंपल है. देखिए बेटा, एक स्टेप आपको याद करने, बाकी के तो सेम के सेम है. वहां पर भी आपने लिखा था कि सेलेक्ट द सेल, यहाँ पर भी आपको लिखना है सेलेक्ट द सेल. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस होम टैब 68.
instead 70. Then select the cell or range, click on the home tab, and then click on cut option. In the previous topic, you have seen that we have to click on the copy option. Now we are considering moving the cell contents. That means now we have to select on this cut option. Where? From the clipboard group. Then an animated dashed line appears around the cell. We have seen in the previous topic. Now click on the new cell. फिर से वही बात देखिए, जितने भी आपने स्टेप देखिए एकदम सेम है, एकदम एग्जैक्ट है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज हो गया, वो है कट ऑप्शन। बाकी तो सेम है। और इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा कि जिस किसी को भी, जिस सेल को भी अपन ने, जिस डेटा को अपन ने सेलेक्ट किया बच्चों, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। जबकि कॉपी में अपन ने क्या देखा था, वो वही का वही रहता था और उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाती थी। बट कट ऑप्शन में क्या है कि वो वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने इस ललित को सेलेक्ट किया है, ललित को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ से तो ललित जो है वो डिलीट हो चुका है और यहाँ पर ललित आ चुका है, यानी कि जो उसकी एग्जैक्ट, जो उसकी प्रीवियस लोकेशन थी वहां से वो डिलीट हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए ये देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज दे रखी है। अगर इफ यू विल यूज कंट्रोल सी देन इट विल हेल्प यू टू कॉपी द डेटा, इफ यू विल यूज कंट्रोल प्लस एक्स देन इट विल हेल्प यू टू कट द डेटा, दैट मीन टू रिमूव द डेटा, एंड कंट्रोल वी फॉर द पेस्टिंग द डेटा। ओके राइट, नाउ विल अंडरस्टैंड द अलाइनिंग सेल कंटेंट्स। अलाइनिंग का मीनिंग बेटा हमेशा यही होता है कि आप उसको किस पोजीशन पे रखते हो। The position might be top, middle, center. Okay, तो अलाइनिंग का मतलब आपको हमेशा क्या रखना है, पोजीशन। सो कौन कौन से पोजीशन हो सकते हैं? टॉप अलाइन, नाम से पता चल रहा है टॉप में रखेगा टेक्स्ट को, मिडल अलाइन, फिर बॉटम अलाइन, अलाइन लेफ्ट, सेंटर और अलाइन राइट। तो चलिए टॉप अलाइन को पढ़ते हैं फटाफट से। टॉप अलाइन का मीनिंग क्या बेटा कि जब भी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो पूरे सेल के टॉप पर दिखाई देगा। मिडिल अलाइन में एकदम मिडिल में आ जाएगा, बॉटम अलाइन में एकदम सेल के जस्ट बाउंड्री के नीचे रहेगा। अलाइन लेफ्ट में क्या करेगा, जो उसकी अपीयरेंस है बेटा वो आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगी, और सेंटर में उसकी अपीयरेंस आपको सेंटर में दिखाई देगी, और अलाइन राइट में वो राइट के थ्रू जाएगा। Now you can understand this thing, this alignments with this with the help of this screenshot. देखिए बेटा ये जो टॉप अलाइन है आप देख सकते हैं कि इसका जो टॉप मोस्ट बॉर्डर है उसके पास दिखाई दे रहा है, मिडिल में आपको मिडिल में दिखाई दे रहा है, बट इसकी जो आप कह सकते हो राइट या लेफ्ट में है, तो ये किस साइड में है, लेफ्ट में ही है। बॉटम अलाइन में आप देख सकते हो जो बॉटम लोअर जो आपका ये है बॉर्डर उसके जस्ट नीचे है, बट अगर आप इसको अलाइनिंग लेफ्ट कर देते हो तो लेफ्ट में ही है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है। सेंटर में कर दिया तो ये सेंटर में दिखाई दे रहा है, और राइट में कर दिया तो ये राइट साइड दिखाई दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, please give your consent by just showing your thumbs up sign so I can be assured that whatever I am teaching you I am clear to everyone. Okay then. So merging cells. Now we will understand a very interesting topic, students. Very interesting topic, which is about the merging cells. So now we are merging into columns, to rows, whatever you are want to merge. Merge means to add the things. Okay. Adding means उसको मिला देना. So this is about the merging. So the merge and center option is used to combine two or more selected adjacent cell. Now students will ask me what is adjacent cell. I hope that you are understanding the adjacent sides, adjacent एंगल इन योर मैथमेटिक्स आल्सो। एडजेसेंट मीन क्या होता है, जस्ट उसके पास में, जस्ट उसके बगल में, इन द सेम डायरेक्शन, है ना। सो एडजेसेंट सेल्स टू क्रिएटिंग सिंगल सेल। नाउ सेलेक्ट द सेल, देखिए फिर से वही ऑप्शन है, फिर से वही स्टेप्स है। आपको क्या लिखना है बेटा, एक बार मेरे साथ बताओ, सेलेक्ट द सेल्स टू मर्ज देम। वहां पर अपन ने कॉपी देखा था, वहां पर अपन ने कट देखा था, अब अपने को किस पे क्लिक करना होगा, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में। बट अभी कहां पर मिलेगा अपने को, अलाइनमेंट ग्रुप में ही मिलेगा, लेकिन टैब जो है वो अपना वो होम टैब ही रहेगा। ठीक है, कितना सिंपल है ना। आप लोग कह सकते हैं कि ये तो सर बहुत इजी है। तो अपन ने देखिए यहाँ पर, ये देखिए बी कॉलम है, सी कॉलम है और डी कॉलम है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, क्लास 6 मेरी बहुत अटेंटिव है, फटाफट से देखेंगे। बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स है,
और यहाँ पर केवल जी राम बुक्स या जो भी कुछ लिखा हुआ है, सपोजिंगली लयाल पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि लयाल पब्लिक स्कूल जो वो एकदम सेंटर में आ जाए और बी वाले की जगह तो नहीं रखी, इसलिए सी और डी को भी मर्ज कर दे। तो अपन ने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर अपने इस पे मर्ज एंड सेंटर पे गए। यहाँ पर आप देखेंगे कि बी, सी और डी कॉलम एक साथ मर्ज हो चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि एक ही सिंपल बॉक्स थे। तो इससे क्या कर दिया अपन ने, एक सेल को, एक कॉलम को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मर्ज कर दिया। आई होप आई एम क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए रैपिंग सेल्स, रैपिंग सेल्स का मतलब है सेल्स को अपने क्या कर देंगे, रैप कर देंगे, यानी कि एक कर देंगे। रैपिंग का मतलब क्या होता है, एक कर देना, उसको कंबाइन कर देना। चलिए, द रैप टेक्स्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू रैप लॉन्ग टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन। सपोजिंगली आपने अपना नेम है वो बहुत लेंथी तरीके से लिख दिया, बहुत लेंथी लिख दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, तो अपने क्या कर सकते हैं, उसको रैप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई चीज जो टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइंस में लिख दिया, बट यू वांट टू शो इन द सेम रो, द सेम कॉलम, देन यू कैन यूज द रैपिंग सेल्स ऑप्शन। सो फिर देखिए, अगर मैं बताऊं कितना सिंपल सा स्टेप है, सेलेक्ट द सेल। सर केवल सेलेक्ट द सेल ही याद करना है? बिल्कुल, सेलेक्ट द सेल ही याद करना है आपको। फिर क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ द होम टैब। देखिए टैब तो हमारा बदला ही नहीं इस चैप्टर में अभी तक, होम टैब ही है, क्या बात है। फिर उसके बाद अपने गए अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में जाने के बाद अपने को किस पे क्लिक करना है स्टूडेंट्स, रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए स्क्रीनशॉट पे बहुत क्लियरली मेंशन है, बहुत क्लियरली। देखिए अब ये देखिए जो जी राम बुक्स है और दिल्ली है, ये दो अलग अलग कॉलम्स में आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बुक्स जो है इसका केवल बी ओ ही दिख रहा है, अपने को तो बाकी का मैटर ही नहीं दिख रहा। सो नाउ हाउ वी कैन एडजस्ट इट, वी कैन जस्ट रैप देम अराउंड। So now where I have to select, first I will select my column, sorry I will select my data, that means cell. Now I have to go with my merge and center option, sorry wrap text option. Now I can see that G Ram books is visible in my same height. Okay, कैसे दिख रहा है, क्योंकि जहां पर आपको देखिए बी ओ ओ के एस, यानी कि बुक्स की जो स्पेलिंग थी इसमें से केवल आपको बी ओ ही दिख रहा था। बट वंस आई हैव अप्लाइड द रैप टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप, नाउ इट इज विजिबल मी द कंप्लीट स्पेलिंग, राइट? ओके, गिव योर कंसेंट स्टूडेंट्स, हरी अप, गिव योर कंसेंट। So now our next topic is changing orientation of text. Now obvious question is, what is orientation? Orientation means finding the exact position, finding the exact position, applying the exact angle, applying the exact position of any text. Okay, if you want to display our text in a vertical manner, if you want to display our text in a horizontal manner, so this will be referred as the orientation, right? So the orientation option is used to rotate the text in a variety of ways. If we are rotating our text in a different manner, that means we are changing its orientation, student, right? So select the cell to rotate its text. Okay, once again we are selecting the cell, we are selecting the data. Click on orientation option from the alignment group of the home tab. Choose an angle to rotate. Now we have to choose the angle. Okay, beta. So once we have selected the cell, now we have to click on the orientation option from the alignment group on the home tab. देखिए फिर से टैब अपना नहीं बदला, अपना ग्रुप नहीं बदला, अपने को बस ऑप्शन बदलना है। Now choose an angle to rotate. Now we can choose the angle. So this is the angle. Angle counterclockwise, out angle clockwise, vertical text, rotate text up, rotate text down, and format cell alignment. So now you can see the output. Okay, now you can see the output. एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, दैट मींस अपने क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं, सॉरी नॉन क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं। एंगल क्लॉकवाइज इसको क्लॉकवाइज अपने रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वर्टिकल टेक्स्ट में तो जी राम बुक्स जो है वो वर्टिकल मैनर में आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन को तो टेक्स्ट डाउन की तरफ जा रहा है, रोटेट टेक्स्ट अप इसका मतलब है अप की तरफ जा रहा है। इन द सेंस, इन द समरी, अगर ओरिएंटेशन को आपको समझना है, इसका मतलब ये है कि आप उस टेक्स्ट के अलग अलग एंगल्स को, अलग अलग रोटेशंस को आप इसको चेंज कर रहे हैं, राइट? सो नाउ द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज अ डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स इज अ स्मॉल विंडो इन व्हिच वी हैव बीन गिवन द थ्री ऑप्शंस, close it, minimize or maximize it. Okay, so these are the dialog box. This is also a dialog box, friend.
Okay. So the dialog box launcher button in the alignment group opens the format cells dialog box. If you will click on this dialog box launcher button, then it will show you a kind of format cell dialog box जहां पर आप different प्रकार के formatting कर सकते हैं. So the dialog box provides option to format data in different ways. So अब आप पूछेंगे कि सर हम कहां से ला सकते हैं dialog box launcher? देखिए कुछ alignment group होते हैं, इसके छोटे सी जगह पर एक ऑप्शन सा होता है, बहुत छोटा सा एरो. वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत बढ़िया सा एक अपने को डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. यहाँ पर आप देखेंगे नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है. तो इसके अलाइनमेंट के अंदर भी जाके आप अपने ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको रोटेट कर सकते हो. राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम. So now the next topic is saying that how we can insert rows and column in our Excel sheet. Supposingly we have created a table and now we want to insert a new column. So how can we do this? Very simple. Once again I am telling you the steps. Select a row to insert a new row above it, and or select the column to insert a new column to its left. So now the question comes that what is the by default insertion of a row happens. So it allows you to select a row to insert a new row above it. कहां पर इंसर्ट करेगी नई रो? above में करती है, सबसे ऊपर की तरफ करती है, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया है. और अगर आप एक कॉलम को सेलेक्ट करके कि एक नया कॉलम ऐड करेंगे तो वो कहां पर आएगा? उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो देखिए फिर से वही होम टैब. अब अपने को क्या करना है? इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है. इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे ही अपने जाएंगे वो अपने से पूछेगा कि आपने को रो सेलेक्ट करनी है या आपने को कॉलम सेलेक्ट करना है. तो आपको जो भी अकॉर्डिंग लगे आप उसको कर सकते हो. जैसे कि मान लो मैंने इस डेटा को चुना, सेलेक्ट किया, फिर मैं होम टैब के अंदर हुई, उसके बाद मैं किस पे गया? इंसर्ट ऑप्शन पे गया. इंसर्ट ऑप्शन पे मान लीजिए मैंने किस पे क्लिक किया? इंसर्ट शीट रो. शीट रो के अंदर यानी कि एक नया रो और ऐड हो जाए तो वहां पर आप देखेंगे कि एक नया रो ऐड हो जाएगा. और कहां पर होगा? अबाउट होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिलीटिंग रो एंड कॉलम. आपने डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी भी रो और कॉलम को? बहुत ही सिंपल है. ठीक है, कैसे करेंगे? सेलेक्ट द रो. फिर से वही बात सर तो आप एक ही स्टेप बता रहे हो. बिल्कुल, क्योंकि हमें बहुत ही सिंपल सा क्या करना है? एक ही स्टेप को फॉलो करना है ना. तो सेलेक्ट द रो और कॉलम टू डिलीट. ऑब्वियसली इफ यू वांट टू डिलीट एनीथिंग देन यू हैव टू सेलेक्ट इट. Very simple to understand. Then we are on the home tab. Then we have to select on the delete button. Now it will ask you what you want to delete, students. Do you want to delete sheet column or do you want to delete the cell? If you want to delete the row, then you will click on this delete sheet row. If you want to delete the column, then you will click on this delete sheet column. Okay, so here you can understand this is my column B in which I have created the class attribute 7th A, 7th A, 7th and all. Now if I want to delete this column, so I will select it, home tab, delete option, delete sheet column, and now it will be disappear. Now you cannot see the class option here, right? Now the inserting cell. Next topic is inserting cells. How we can insert the cell? To insert cell, select the cell or range of cells where you want to insert cell. Once again we have to select it, then click on home tab, then click on insert tab, then click on the insert cell option. Very easy chapter. This is student, very easy chapter. अब देखिए यहाँ पर मुझे एक और नया सेल क्रिएट करना है. देन इसको सेलेक्ट किया, होम टैब के अंदर में हुई, उसके बाद मैं इंसर्ट पे गया. इंसर्ट के बाद मुझे किस पे क्लिक करना होगा स्टूडेंट्स? सेल्स के अंदर क्लिक करना होगा ना. फिर से वो मुझसे पूछेगा कि कहां पर आपको क्या आपको राइट में शिफ्ट करना है नया डेटा को या आपको उसको डाउन में शिफ्ट करना है. सो इट्स अप टू यू व्हिच ऑप्शन यू सेलेक्ट. व्हाटएवर द ऑप्शन यू हैव सेलेक्टेड, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन. शिफ्ट सेल्स डाउन. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो डेटा था ललित का वो 455 वो शिफ्ट हो चुका है. किस तरफ से? डाउन तरफ से. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट. नाउ द टॉपिक इज डिलीटिंग सेल्स. डिलीटिंग सेल्स. हाउ वी कैन डिलीट अ सेल? टू डिलीट अ सेल वंस अगेन स्टूडेंट्स आप ही बताइए क्या करना होगा अपने को? सेलेक्ट द सेल, फिर होम टैब, फिर डिलीट. अब अपने से क्या पूछ रहा है वो? डिलीट करने. किसको डिलीट करना है? सेल को डिलीट करना है. Then we will select the delete cell and then it will be deleted. 455 will be deleted.
So this is how we have understood the various aspects of this chapter. I hope this is enough for today. In the upcoming session, we will see how we can change the row and height, how we can just practically implement it, deleting the cell contents, autofill. Autofill is a really nice feature of this Excel, and then undo and redo formula, entering a formula, and etc. So these are the remaining part of this chapter. So we will understand this in the next session. I hope that you have enjoyed this session.